Okay, good morning. Welcome back to my YouTube channel, Medical Classes by Dr. Srinidhi Kumar Acharya. And today we will discuss about the ascending tracts. Ascending tracts, we have covered many portions. And last class we have covered the dorsal root system. Then we have also covered the anterior tracts and also lateral tracts, which is totally called as anterolateral tracts, which are part and parcel of ascending tracts. Okay, so today we will have another important part, that is details of the fast and slow pain. In the last class we have discussed anterior tracts and as well as lateral tracts. What is happening in the lateral tract is pain and temperature and as well as crude touch. So these are the three sensations which are going through the lateral tract, isn't it? And rest of all the sensations are going through the anterior tract. They are called as primitive sensations. Primitive sensations are going through the anterior tract, and lateral tract is taking the pain, temperature and as well as crude touch. So while explaining this, we have seen that pain is of three types. One is pain which is originating from the skin. Another one is pain which is coming from the special organs, special senses. That means sensation, pain sensation or whatever sensation it is carried. So that can be originated from the skin, that may be originated from the visceras. And we have seen that pain fibers are classified into A fibers and C fibers. So this also we have seen in the last class. Now we have to look more about the pain, because pain is the most disturbing problem. So we should know more about the pain. Now we know that pain will be carried by the A fibers. The skin में जो भी pain होता है, वहाँ से receptor stimulate हो गया, वो pain बहुत जल्दी carry होता है, and for that we use the fibers which are used is A fibers. A fibers are highly myelinated, so they do the rapid action and quick action. It is also called as delta fibers. Whereas the pain which is coming from the viscera and some other part which is called a dull pain, so that will be carried by the C fibers. C fibers are not much myelinated, so the transmission of the pain sensation is not so quick in case of visceral pain. जैसे विजरल पेन है कि फॉर एग्जांपल डायरिया के टाइम में आपको जो है क्रैम्पिंग पेन हो रहा है, तो वो सब विजरल पेन में आता है. या लिवर बड़ा हो गया और जो है उसका कैप्सूल स्ट्रेच हो रहा है, तो वहाँ पे जो पेन आ रहा है वो तो विजरल पेन है, ठीक है. या ट्यूबुलर पेन्स जो भी है कि कोलिलिथियासिस का पेन हो सकता है या यूरोलिथियासिस का जो पेन है, वो सब जो एक्चुअली विजरल पेन्स में आता है, ठीक है. सो दैट इज नॉट कैरिड सो क्विकली, इट इज स्लोली कैरिड. नाउ C fibers are the slow pain fibers, and when they enter into the spinal cord, now we shall see the C fibers. C fibers is slow pain fibers, जो visceral pain को लेके जाने वाला है. So when they enter the spinal cord area, they are diffusely connected with many neurons. ठीक है, हम पेन का बात कर रहे हैं. So जब ये पेन fibers ऊपर जाके when it goes to the spinal cord area, they are diffusely connected with the many neurons. And CNS is actually not able to exactly localize the pain. Because of these diffuse connections in the spinal cord by means of many neurons, CNS is not able to exactly identify the locality of the pain or localized area of the pain. Now here comes one important aspect, that's called as gating theory. आपने नाम सुना होगा gating theory. Okay, so there is another theory which is called as gating theory. What do you mean by gating theory? There was experiences that since centuries together, massaging will decrease the pain, isn't it? हम भी हमारा पंचकर्मा में we are using abhyanga, different types of bahya abhyangas, etc. And since centuries together, even Ayurveda also says that abhyanga or massaging of any types will going to decrease the pain, isn't it? That's the reason why we are also doing massage. Contemporary science explains this by means of gating theory. What do you mean by that? Now here, massaging or rubbing may decrease the pain
or sometime also the theory of acupuncture also decrease the pain. Acupunctural maneuvers, different types of acupuncture maneuvers and methods, they also decrease the pain. Not only massage etc. or any type of rubbing or counter irritation, that will decrease the pain. जब हम headache होता है तो हम क्या करते हैं कि लाल तेल लगाते हैं. The reason is very simple. That particular lal tel, whatever is very counter irritant. It has got very irritation property. Because of that irritation, the headache will come down. This is again working by means of gating theory. Whenever we have got the pain, we will go for some counter irritation. So that is the explanation of gating theory. You will see that what. Similarly, in case of acupunctural procedures also, they produce some other pain, other stimulus, rubbing or what, pricking, etc. So because of which pain will going to decrease, intensity of the pain will come down. So that has been explained by gating theory in the modern science. Okay. So what actually happens? See, certain medicines like liniments or irritable materials decrease the pain. Okay. And the low frequency electrical stimulation etc. will also decrease the pain. हम फिजियोथेरेपी में सब करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देते हैं, माइल्ड इलेक्ट्रिकल शॉक दे करके पेन को कम कर देते हैं. सो थिंग इज whenever the patient is suffering from the pain, and if you are producing another sensation in a strong way, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में दूसरा कोई सेंसेशन को आप स्टिमुलेट करते हैं तो पेन का इंटेंसिटी कम हो जाता है. दैट इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इन केस ऑफ मसाजिंग और अभ्यंगा. व्हेन अभ्यंगा वी आर डूइंग अभ्यंगा, व्हाट एक्चुअली हैपनिंग इज यू आर गिविंग द वाइब्रेशन प्रेशर, वाइब्रेशन सेंस स्टिमुलेशन, प्रेशर स्टिमुलेशन, है ना. जितना सारे स्टिमुलेशन सेंसेशन को आप स्टिमुलेट कर रहे हो, वाइब्रेशन को स्टिमुलेट कर रहे हो, प्रेशर को स्टिमुलेट कर रहे हो. अगर आप थोड़ा बहुत गर्म तेल यूज़ कर रहे हो तो हीट सेंसेशन को आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, स्टिमुलेट कर रहे हो. या कोल्ड सेंसेशन को स्टिमुलेट कर रहे हो. फाइन टच हो गया, क्रूड टच हो गया, ठीक है. सो मेनी डीप प्रेशर हो गया. सो मेनी सच सेंसेशंस यू आर स्टिमुलेटिंग. Now what happens when you are stimulating many such stimulations, that decreases the intensity of the pain. जो पहले से जिसको जो पेन हो रहा था उसका इंटेंसिटी कम हो जाता है. That's the reason why actually the massage will go into work. Or in terms of Ayurveda, if you are talking, there are many other benefits. One of the theory why Abhyanga should be done, that is gating theory. There are many other theories also according to Ayurveda. One of the theories is gating theory also. Now let us see what is this. Now details of the fast and slow pain we shall see again. Continue. During the pain, the nerve endings which are coming from the pain receptors, when they reaches the spinal cord area, during the pain, the nerve endings which are coming from the pain receptors which is present in the skin, when they reaches the spinal cord area, they give rise to second order neurons. We know that dorsal nerve root ganglia में क्या होता है ये हमें पता है. And there is a production of neurotransmitter glutamate P. वहाँ पे जहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन एंड होता है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू होता है, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर. At that particular junction, what happens? There is a production of a glutamate P. Glutamate P is one of the neurotransmitter. Okay. Before it enters into the second order neuron, what is discovered is the other neurons may be of fine touch, vibration, pressure, etc., which are coming through the dorsal pathway, produces certain collaterals with the pain pathways, and also the collaterals with the anterior and lateral ascending tracts with the help of connector neurons. I will show with the figure, then things will be clear. ठीक है. सो पेन का एक पाथवे अलग है, आपको पता है वो किसमें, लैटरल में जाता है, ठीक है. और उसी एरिया में एसेंडेंट ट्रैक्ट से बात कर रहे हैं ना हम, तो वहाँ पे डॉर्सल ट्रैक्ट्स का भी बहुत सारे न्यूरॉन्स आ रहे हैं. हमने एक्सप्लेन किया था डॉर्सल नर्व रूट गैंग्लियन में. प्रोप्रियोसेप्शंस का भी बहुत सारे नर्व्स आ रहे हैं, ठीक है. और डॉर्सल रूट में जो जाने वाला जितना भी सेंसेशन है उसका भी जो है नर्व रूट्स आ रहा है. तो वो सब वहाँ पे आ रहा है डॉर्सल नर्व रूट गैंग्लियन का लेवल में, एट द लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. ओके. सो नाउ एक्चुअली व्हाट हैपन्स इज, तो ये सब वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है. सो पेन पाथवे गिव्स सम कोलैटरल्स विद दिस पाथवेज. पेन का जो पाथवे है वो वहाँ पे आते क्या करता है, कुछ कनेक्शन कर लेता है
ये जो बाकी जो नर्व सिस्टम का असेंडिंग ट्रैक्ट्स का नर्व के साथ with the help of the connector neurons. Okay, these connector neurons release the neuron transmitters which inhibit the pain pathway and the pain is reduced. Okay, now if this connector pathways are connected with the other sensations like deep pressure हो गया, vibration हो गया, pressure हो गया, fine touch हो गया, तो वो सबसे वो connected है. ठीक है, अब पेन का जो पाथवे क्या करता है, अपने कनेक्शन बना देता है किसके साथ, ये बाकी सेंसेशन का न्यूरॉन के साथ, थ्रू द कनेक्टर न्यूरॉन्स. सो व्हेन देयर इज ए पेन, जब पेशेंट को पेन हो रहा है उसी टाइम पे आपने दूसरा सेंसेशन को ज़बरदस्त तरीके से आपने स्टिमुलेट कर दिया, तो क्या होगा कि वहाँ पे ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस होगा जो पेन पाथवे को सबसाइड करेगा. ओके, रिड्यूसेस एंड हेंस इट रिड्यूसेस द इंटेंसिटी ऑफ द पेन. And this is called as gating theory. This is called as gating theory. So if you stimulate some other sensation like pressure, vibration, etc. by massaging or some other techniques, they block the pain carrying fibers due to this connector neuron activity, and truly the pain is reduced. Truly the pain is reduced. But as soon as ये sensation को आपने ख़त्म कर दिया, मसाजिंग आपने बंद किया या काउंटर इरिटेशन जो भी है उसको बंद किया, तो पेन वापस शुरू हो जाएगा. जब ये पेन, ये जो स्टिमुलेशन चल रहा है बाकी सेंसेशन का, तो पेन का स्टिमुलेशन आपको पता नहीं चलेगा, वो कम हो जाएगा. ठीक है, तो ये ऐसे हो गया कि एक जो बच्चा जोर से क्राई कर रहा है, ठीक है, तो उसका आवाज़ सबसे ज़्यादा सुनेगा सबको. ठीक है, और जब वो क्राई कर रहा है तो उसके साथ बाकी भी 10 आवाज़ आ गया. ठीक है, उससे भी बड़ा भी आ गया आवाज़, तो बच्चे का जो रोने का साउंड कम सुनाई पड़ेगा, बाकी साउंड ही ज़्यादा सुनाई पड़ेगा. सिमिलरली यहाँ पे भी यही हो रहा है कि पेन पेशेंट को हो रहा है, उसी टाइम पे आपने दूसरा स्टिमुलस को आपने स्टिमुलेट कर दिया, तो बाकी स्टिमुलस के सामने पेन का जो इंटेंसिटी है पेशेंट को कम महसूस होगा. ओके, सो इन दिस वे यू कैन रिड्यूस द पेन ऑफ द पेशेंट ट्रांसिशनली, मतलब ट्रांसिएंटली, नॉट ट्रांसिशन, ट्रांसिएंटली जो है थोड़ा देर के लिए, टेम्पररली आप उसको पेन का इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं. वंस दीज स्टिमुलस आर विड्रॉन, stimulus for the different sensations are withdrawn, again patient feel the pain. But this is one of the way of reducing the pain in emergency or whenever required, which is practiced since long back by different methods, although they do not know the scientific reasons and all these things, but this is practice. Nowadays also it is practice. जब हेडेक होता है तो हम कुछ और विक्स वगैरह, अमृतांजन वगैरह लगा देते हैं. ठीक है, उसका जो काउंटर इरिटेशन से हेडेक कम हमें महसूस होता है, पेन कम महसूस होता है. ओके, सो दिस इज एक्सप्लेन्ड एज गेटिंग थियरी. दिस इज एक्सप्लेन्ड एज गेटिंग थियरी. नाउ इफ यू लुक इनटू दिस पिक्चर्स, थिंग्स विल बी वेरी क्लियर. ओके, सी दिस इज द पेन सिग्नल. यहाँ पे पेशेंट को पेन हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है पिक्चर, है ना? नो सर, हाँ अभी आ गई सर. ओके, इफ यू लुक एट दिस पिक्चर नाउ, दिस इज पेन, यहाँ से हो रहा है पेशेंट को, तो पेन सिग्नल यहाँ से आ गया. ठीक है, अब ये पेन इज कैरिड थ्रू द ये फाइबर्स, डेल्टा फाइबर्स से जो है, ये स्मॉल नर्व फाइबर्स है, यहाँ से फिगर दिखाया, तो यहाँ से ये पेन कैरी हो रहा है. ओके, दे आर कॉल्ड एज डेल्टा नर्व फाइबर्स, और ये फाइबर्स आपको पता है. ठीक है, तो ये पेन अब यहाँ तक आ गया, ये पेन यहाँ तक आ गया. ये एक्चुअली डॉर्सल नर्व रूट गैंग्लियन वाला एरिया है, और यहाँ से जो है आपका स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाएगा. ठीक है, जो पेन का ये सेंसेशन यहाँ से होके, यहाँ से होके, यहाँ से होके ऐसे जाना था, ऐसे जाना है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन में जाना है. अब इसी जंक्शन में आपने क्या कर दिया, ये जो जंक्शन है, यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे एसेंडिंग ट्रैक्ट्स, देखो यहाँ पे ये बीटा नर्व फाइबर्स भी आ रहा है, लार्ज नर्व फाइबर्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे नर्व फाइबर्स यहाँ से आ रहे हैं. ठीक है, ये वाला जंक्शन है, और पेन का भी फाइबर्स यहाँ से आ रहा है, ये जंक्शन है. इसके बाद ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर चला जाएगा. बट यहाँ पे पेन का फाइबर्स ने क्या किया है, बहुत सारे अपना कनेक्शन कर दिया इन फाइबर्स के साथ, ये फाइबर्स के साथ. ठीक है, जो बाकी आपका डीप प्रेशर हो गया, वाइब्रेशन का या जो भी है, सभी फाइबर के साथ कनेक्टर न्यूरॉन्स के थ्रू इट मेड ए कनेक्शन. नाउ व्हेन यू स्टिमुलेट दीज फाइबर्स मोर, जब ये फाइबर्स को आपने ज़्यादा स्टिमुलेट किया,
तो उसका तुलना में यहाँ पे पेन का इंटेंसिटी कम दिखाई पड़ेगा और महसूस होगा, बिकॉज जैसे ये स्टिमुलेट हो जाएगा तो यहाँ पे बताते हैं कि ग्लूटामेट नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर है, वो स्टिमुलेट होता है और वो जो है पेन का इंटेंसिटी को कम कर लेता है, ठीक है. बट वंस यू रिमूव दिस सेंसेशंस एंड once you remove these sensations, again the pain may restart. Now this theory is called as a gating theory. This theory is called as gating theory. If you look at this picture again, यहाँ पे भी almost all same चीज thing is explained. See, there is a painful stimulus which is carried through the C fiber, suppose, ठीक है, and it goes to this area, okay, and different fibers will come over here. And when they are stimulated, pain intensity is reduced. This is called as pain gating theory. Okay, so therefore we can modulate the pain by giving some other sensations. We can modulate the pain. Okay, and now if you see, there is another theory of modulation of the pain. एक तो पेन को हम इस तरीके से मॉड्यूलेट कर सकते हैं गेटिंग theory के थ्रू, ठीक है. वी कैन यूटिलाइज दिस प्रिंसिपल इन द ट्रीटमेंट ऑल्सो, स्पेशली इन आयुर्वेदा. वी कैन यूटिलाइज दिस थियरी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गिविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसेशंस, ठीक है. तो वी कैन यूज षष्टिकशाली पिंडस वेदा, वी कैन यूज द मर्दना, वी कैन यूज पादाभ्यंगा, वी कैन यूज संहनना, वी कैन यूज अभ्यंगा, वी कैन यूज पादाभ्यंगा, वी कैन यूज शिरोपिचू, ठीक है. जो भी है, जो प्रेशर, अलग अलग सेंसेशंस को देने वाला जो भी मैनोवर हम जो करते हैं, ठीक है, इवन सम ऑफ द योगा प्रोसीजर्स, ओके, सो दे ऑल्सो वर्क बाय दिस मेथड, ओके, वो पेन को कम कर लेता है. अनदर थियरी इज डिसेंडिंग एनर्जेटिक सिस्टम विद इन अवर CNS वेयर द मैकेनिज्म्स विच रिड्यूस द पेन, ठीक है. नाउ अनदर थियरी वाई हाउ द पेन कैन बी मॉड्यूलेटेड इज from the area of the, actually क्या होता है कि from the area of the third ventricle and mid brain, okay, you have to understand this. Periventricular area या third ventricular और mid brain का area और periventricular gray matter और periaqueductal gray matter और nucleus raphi etc. ये सब, these are the different parts which is present in the mid brain and the basal ganglion area और base of the brain, ठीक है. तो वहाँ से क्या होता है, some of the special neurons are coming down. Some of the special neurons are coming down. तो वहाँ पे already कुछ special neurons है which is coming down, descending from these areas. Okay. Now sometime when you have got the pain, these particular neurons, special neurons which are present in these areas, they will release some neurotransmitters. Okay. They will release some neurotransmitter at a spinal cord pain gate area and inhibit the pain transmission. अब ये दूसरा थियरी है. What happens whenever you feel the pain, sometime another theory is the special neurons which are present within the brain, they release some of the neurotransmitters at the spinal cord pain gate area जो हम डिस्कशन कर रहे थे spinal cord का लेवल में, and these neurotransmitters are believed to be decreasing the pain transmission. वो क्या करता है, पेन तो वहाँ तक आता है और उस पेन को ऊपर लेके जाने से वो रोक लेता है, ठीक है. स्पाइनल कॉर्ड से ऑलमोस्ट स्पाइनल कॉर्ड लेवल तक पेन आ गया, बट वहाँ से पेन का जो ट्रांसमिशन है और उसका जो फर्दर कोर्स है, जो ब्रेन का अंदर जो जाना है, सो दैट विल बी प्रिवेंटेड बाय दिस न्यूरोट्रांसमीटर्स. सो दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स आर समथिंग लाइक मॉर्फिन, ठीक है. ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, एक जिस तरीके से मॉर्फिन एक सेडेशन करता है, मॉर्फिन देने के बाद आपको पेन पता नहीं चलता है ना. सो मॉर्फिन, देयर एक्शन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ द मॉर्फिन, which is nothing but a painkiller. Morphine is basically a painkiller, okay, by means of sedative action. So such morphine-like substances are produced by these neurons actually. जो neurotransmitter वो produce करते हैं वो morphine-like substances है, ठीक है. So they are called with a different name like encephalin or enkephalin or endorphins. You might have been heard about the name endorphins, ठीक है. So endorphins are produced and these endorphins will going to reduce the intensity of the pain. So now pain reduce करने के लिए हमारा पास दो important method है. एक तो पेन गेट एरिया में जो चीज़ होता है और दूसरा ब्रेन का अंदर से जो है एंकेफेलिन या एंडोर्फिन जैसा मटेरियल्स यूज़ करते हैं. नाउ यू थिंक व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स विच आर यूज्ड इन आयुर्वेदा. ओके,
so that endorphins and enkephalin etc. substances are produced from the brain in more and more amount. Maybe Shiro-Pichu is working like this. Okay, maybe Shirodhara is working like this, and that's the reason Shirodhara gives a relaxation. Okay, or Shiro Basti, Shiro Abhyanga, Shiro Lepa, whatever different methods we are using, that might have been working by this principle. Okay, so Abhyanga and other things already we have seen. Now, if you look into the other part, pain is modified many ways by the CNS. Okay, so this is how the pain is modified. One at pain gate area, and another one is by means of endorphins. So now basically, if you are able to modulate the CNS, you can modify the pain. ठीक है, अगर CNS को आप modify किया तो pain को आप modify कर सकते हैं. The reason is pain is basically an emotional component. Pain is basically an emotional component है. मतलब अगर आपको emotional क्यों है, अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है सबके सामने, तो आपको जो है पेन का जो फीलिंग है वो ज़्यादा होगा. अगर कोई बंद कमरे में आपको मारता है तो पेन का एक्चुअली परसेप्शन आपको कम होगा, है ना, क्योंकि वो इमोशनली काउंटेड है. अगर 10 लोग देख रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पेन होगा. ठीक है, 10 लोग नहीं देख रहे, अकेले में कोई हमारा पिटाई कर रहा है तो इतना ज़्यादा दर्द नहीं होगा, क्योंकि this is emotional component. Pain is related emotionally, and also it is related to the limbic system. Okay, pain is emotional component, and also pain is related to the limbic system. Therefore, अगर आपको कोई नहीं देखा, ये वाला भावना आपके पास आ गया, अकेले में मारा है, तो वो आपको दर्द होने के बाद ज़्यादा दर्द होने के बाद भी दर्द का महसूस कम होगा. और कोई सबके सामने थोड़ा हल्का ही मारा तो भी जो है आपको दर्द का इंटेंसिटी ज़्यादा लग सकता है. सो therefore when the patient is more anxious, the pain feeling is more. Similarly, जब पेशेंट बहुत ज़्यादा एंशियस है तो पेन फीलिंग इज मोर. ठीक है. सिमिलरली कंसर्न, लव एंड कंपैशन रिड्यूस द पेन. अगर कोई आपको दर्द हो रहा है, कोई आपसे आके समाधान से बात कर रहा है, आपको कंसर्न दे रहा है, लव कर रहा है, आपसे बात कर रहा है अच्छे से, सो देन इंटेंसिटी ऑफ द पेन इज रिड्यूस्ड. ओके, सो मेनी टाइम्स टॉकिंग टू द पेशेंट रिड्यूस द पेन. ठीक है, बहुत सारे पेशेंट जो है कुछ डॉक्टर्स के पास ज़्यादा जाते हैं, भीड़ आता है, क्योंकि उसका टॉकिंग स्टाइल से, क्योंकि वो जब अच्छे से 3-4 सेंटेंस बात कर लेते हैं तभी जो है पेशेंट को रिलीफ मिलता है, बिकॉज उसको पेन में उसको रिलीफ मिलता है, बिकॉज पेन इज इमोशनल कॉम्पोनेंट. Okay, same is case with the cancer pain. When the patient is suffering from the cancer pain, many people are going and consoling him, talking to him, spending some good moments or a happy time with him. So that reduces the pain, because pain is a emotional component. So you can modify the pain. Okay, so pain is the biggest problem, yes, but pain can be modified. Okay, whatever may be the pain, it can be modified. कहाँ पे गेटिंग थियरी और एंडोर्फिन के थ्रू अब जो है मॉडिफाई कर सकते हो. अब यू हैव टू फाइंड डिफरेंट मेथड्स ऑफ गेटिंग थियरी, of giving different stimulation, and also different methods to produce the endorphin from the brain. Okay, Ayurveda has got plenty of such methods. Now, so this is about the pain pathway. So what we are discussing, which is going through the lateral ascending tract. Okay, now we have got another important thing that is called as spinocerebellar pathways. This is almost all the last portion of the ascending tract. Okay, last portion of the ascending tract. So this is spinocerebellar pathways. So this is also a part of the ascending system, ascending tracts. There are two cerebellar pathways. Spine मतलब spinal cord, cerebellar मतलब cerebellum. तो ये पूरा cerebrum तक नहीं जा रहा है, तो ये सिर्फ जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए cerebellum तक जाता है और cerebellum में बंद हो जाता है, मतलब टर्मिनेट हो जाता है. So that means this particular spinocerebellar pathway is something related to maintenance of the balance and body equilibrium. Okay, body equilibrium को maintain करने के लिए this was used basically. These tracts are very important. So these are the two cerebellar pathway which carries the information from the dorsospinal cerebellar pathway, Golgi tendon, muscle spindle, pressure receptors, and these neurons and come into lateral column and terminate into the dorsolateral Clerk's nucleus in the ipsilaterally and moves ipsilaterally upwards. Yes.
तो ये क्या है कि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से जो बैलेंस और इक्विलिब्रियम के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए उस इंफॉर्मेशन को लेके जाता है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर वॉकिंग, एक पैर आपको आगे चला तो दूसरा पैर भी उठना चाहिए ना, तो उसके बाद दूसरा पैर नीचे रखेंगे तो पहले वाला पैर को वापस उठाएंगे. ठीक है, इसमें कितना बैलेंस का जरूरत है. इतना सारे चीज़ आप करते हैं, स्टिल यू आर नॉट मिसबैलेंस्ड, isn't it? So there are uneven surfaces when you are walking, but still you are balanced. How it is possible? That is possible by means of spinocerebellar pathways, because all the ground information, ground का जो भी information है, ये सब कुछ जो है आपका different receptors के through जो है, so that will be carried to the spinal cord first, and from the spinal cord it is going to the cerebellum. Okay, so now these fibers go upwards in the same side. इसमें क्या कि राइट साइड का जो फाइबर्स है वो राइट साइड में ही जाएगा, लेफ्ट साइड का जो फाइबर्स है वो लेफ्ट साइड से जाएगा. कोई क्रॉसिंग यहाँ पे नीचे नहीं होगा. ठीक है, सो दिस फाइबर्स गो अपवर्ड्स and it later ends in the inferior cerebellar peduncle of the cerebellum. जिस तरीके से वहाँ पे एंट्री होके सेरेबल में एंट्री होने के बाद ये क्रॉस भी होता है. आई विल नॉट गो इन डिटेल, यू विल गो इन इट विल कंफ्यूज यू. ठीक है, सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पाथवे, स्पाइनोसेरेबेलर पाथवे. ट्राई टू मेक बाय दिस पर्टिकुलर फिगर. ओके, so we have got two important pathways. One is a posterior or direct spino, इसमें दो टाइप है, एक posterior और direct spinocerebellar tract है और दूसरा anterior और indirect spinocerebellar tract है. Okay, so these are the two important tracts as shown here. इसमें थोड़ा डिफरेंस है, नहीं दिख रहा. There is some difference is there. I will explain this first and then we will go for the figure. Spinocerebellar pathway में क्या होता है कि the fibers which are above the C8 level, C8 means cervical vertebra 8 level, also enter inside and follow the same pathway, taking the information of the upper limbs and neck etc. and forms a nucleus cuneatus and go upwards. This is cuneo-cerebellar pathway. Another pathway where the fibers coming from the Golgi pressure receptors end up within the spinal cord and moves contralaterally, crossing to the opposite side. I think there is no need of knowing this much. ठीक है, तो इसमें that I will explain otherwise by showing some of the pictures, but you just remember the spinocerebellar pathways. These spinocerebellar pathways are very important, and if the spinocerebellar pathways get affected, then the patient will have ataxia. Patient will ataxia because उसको बैलेंस नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको ग्राउंड का जो इन्फॉर्मेशन है ना वो सेरेबेलम तक नहीं पहुंचता है. सो ही इज़ नॉट एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ. ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द स्पाइनल अटैक्सिया, जो हम बोलते हैं कि मोटार अटैक्सियास. ठीक है, मोटार अटैक्सियास जो होता है या स्पाइनल अटैक्सिया, इसमें एई ट्रैक्ट्स जो है ये डिस्टर्ब होता है. एनी डिजेनरेशन, एनी कंप्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रैक्ट विल result in improper information to the cerebellum, and as a result the cerebellum is not able to maintain the balance and equilibrium, and patient will go into fall, or there is ataxia will be there. Okay, now this is about the spinocerebellar pathways. Now this is totally talking about ascending pathways. In the ascending pathways or ascending tracts we will have so many systems. Main is dorsal nerve root system, which goes in two ways, tract of cuneatus and tract of gracilis. Then we have got other sensations going. Then we have got anterior ascending tracts. Then we have got lateral ascending tracts going through this, and all the dorsal nerve root informations, so they are not crossing at the spinal cord level, except three sensations. One is pain, heat, and as well as fine touch. I think crude touch. Okay, so the pain
temperature and a crude touch. So they are also the ascending tracts only, but they follow a different tract and they are called as lateral tracts. वो spinal cord का lateral में जाता है. Okay, lateral spinocerebral tracts. Okay, spine से मतलब spinal cord से cerebrum को जाता है. And some other fibers very important which is going through the dorsal tracts are proprioceptors tracts. है ना, proprioceptors. Pain pathway we have seen. Then spinocinguate pathway भी है एक. And other details we have already seen. And the latest today what we have discussed is spinocerebellar pathway. This is meant for maintenance of the equilibrium and balance. Okay, so this is what we have discussed. So this is all about ascending tracts. Now we come to another important aspect, that is descending tracts.